Hello guys, welcome back to the channel. So welcome back to the channel. हम लोग कहाँ थे, आगे देखते हैं. Set and achieve all your financial goals. पहले सेट करना है, फिर अचीव करना है सारे फाइनेंशियल गोल्स को. तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ. Okay guys, let's start. Join now. चलो 3 लोग. हेलो प्रीतिशा प्रियदर्शनी दास, बिना बुलाए आ गए, बहुत अच्छा लगा. बिना लिंक फेंके लोग जब आते हैं तो अच्छा लगता है. थैंक्स फॉर कमिंग. और आई होप कि आज आपके इस 1 घंटे को मैं यूटिलाइज़ करूँगा बहुत अच्छे से. आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइन द ऑब्स्टिकल दैट यू विल हैव टू ओवरकम. आपको अपने ऑब्स्टिकल्स को पहचानना होगा जिनको आपको फिर ओवरकम भी करना होगा. ठीक है. वॉट आर द मेन ऑब्स्टिकल और डिफिकल्टीज दैट स्टैंड इन योर वे एंड होल्ड यू बैक फ्रॉम अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स टुडे. आज वो कौन सी चीज़ है जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को आपसे पीछे रख रही है. क्या लेजीनेस, क्या कोई फालतू का काम जो कि आप अपने मेन काम को छोड़कर वो वाला काम कर रहे हो. hold you back from achieving your financial goals. Of all the obstacles holding you back, what is the biggest or most important? देखो बहुत सारी चीज़ें आपको रोक रही होंगी, बट उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है. What are the key constraints or limiting factors that determine how much you earn, save, invest and accumulate? अब क्या है. What are the limiting factors that determine how much you earn, सेव, इन्वेस्ट एंड एक्यूमुलेट. कितना आप पैसा बचाते हो, कितना सेव करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना इकट्ठा करते हो. अ कॉन्स्टेंट इज समथिंग दैट सेट द स्पीड एट विच यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. कॉन्स्टेंट वो है, ये आपकी स्पीड को बताता है कि आप कितने टाइम में कितना अचीव कर लोगे. बेशरम आनंद, हेलो लिखने क्या बात. अरे नहीं यार, आज मेरे पास टाइम बहुत था. आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने सारी अपडेट डाल दी. अरे यार तुम्हारे ताने नहीं, आज टाइम मिल गया था यार, इसलिए सारी अपडेट्स डाल दी. वरना मैंने एक रात पहले स्ट्रीम किया था, बट उसमें मज़ा नहीं आया यार, क्योंकि स्कोर कार्ड के बिना मज़ा नहीं आता. तुम्हारे कहने पे भी लाइव स्ट्रीम बनाई थी. उड़ीसा में बारिश होके ठंडी शुरू. क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. द 80-20 rule applies to constraint in a special way. It seems that 80% of the reasons that you are not achieving your financial goals lie within yourself in some way. What is holding you back is the most cases is the lack of skill or skills. हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आपको ज़्यादा रोक रही है ना, वो चीज़ होगी या तो आपकी स्किल्स, मतलब लैक ऑफ स्किल्स, या फिर स्किल्स. ओके. द लैक ऑफ डिसिप्लिन, या तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या तो हमारे अंदर स्किल्स नहीं है. द कैरेक्टर वीकनेस ऑफ सम काइंड, मतलब या तो हमारा कैरेक्टर बहुत वीक है. अमन, आज हम जल्दी टपक जाने वाला शायद, क्योंकि 2 डेज़ रेगुलर ट्रैवल किया है बोर्ड्स के लिए विदाउट ब्रेक. इट्स ओके, इट्स ओके.
इट्स ओके, कोई बात नहीं, सो जाना, ठीक है। बुखार आ रहा है आज, मैं जल्दी टपक जाऊंगी, इट्स ओके। अमन आज हम जल्दी टपक जाएंगे शायद, क्योंकि 2 दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सो जाओ, आराम से सो जाना, कोई बात नहीं। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट कुड इट बी फॉर यू? आस्क दिस क्वेश्चन, वाई हैवंट आई ऑलरेडी अचीव माई फाइनेंशियल गोल्स? क्यों अभी तक मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ? इन अदर वर्ड्स, वॉट आर योर फेवरेट एक्सक्यूज? क्या आपका फेवरेट एक्सक्यूज है? रैशनलाइजेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर नॉट अर्निंग द अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट टू अर्न। ऐसा क्या वो बहाना है जो आप हर बार दे रहे हो? जब आपको जितना पैसा कमाना है उतना आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो? जवाब आपके पास है, आपका बहाना, उसको सोचो कि वही रीज़न है और वही आपको पैसा दिला सकता है। उस रीज़न को हटाओगे अपनी ज़िंदगी से तभी आएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे पास भाई सेटअप नहीं है, गेमिंग सेटअप नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे बहुत लोगों ने मोबाइल से भी शुरू किया है, बहुत लोगों ने जर्नी ट्रेन से भी ट्रैवल की है। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे पास तो यार गाड़ी से जाने के पैसे नहीं है, कैब करने के पैसे नहीं है। अरे भाई बस का यूज़ करो, मेहनत करो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। For being in debt or for not being financially independent, your answers to this question can tell you a lot about where you are and what you need to do to create your desired future. 8. Determine the knowledge and skills you will require. मतलब आपको क्या होगा कि डिटरमाइन रहो उस नॉलेज के लिए, उस स्किल के लिए जो आपको चाहिए आगे, टू अचीव अ फाइनेंशियल गोल यू हैव नेवर अचीव बिफोर। जो आपको गोल चाहिए, फाइनेंशियल गोल, उसके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी उसी फील्ड से रिक्वायर। यू विल हैव टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप अ स्किल और स्किल्स दैट यू हैव नेवर हैड बिफोर। आपको वो स्किल डेवलप करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। What additional knowledge will you have to acquire to achieve your financial goals? What additional skills will you have to develop? Of all the knowledge and skills that you will require, what are the most important? What is your plan to acquire this knowledge to develop these skills? क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो, कैसे आप इस नॉलेज को गेन करोगे, कैसे आप इस नॉलेज को यूज़ करोगे? मैच बहुत ख़राब गया, उसी दिन उल्टी हो गया, बस मैं बेइज्जती उल्टी देखे लॉल दही बड़ा। अरे यार इतना एक्सप्लेन मत करो यार। वॉमिट तक ठीक था, उसके बाद क्या निकला ये सब एक्सप्लेन मत करो, होश उड़ जाएंगे हमारे यार। योर अर्निंग एबिलिटी, योर एबिलिटी टू गेट रिजल्ट फॉर विच, अब ठीक हो जाना, ऑल इज़ वेल कह रहा हूँ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के बोलना ऑल इज़ वेल। पीपल विल पे यू द काइंड ऑफ मनी दैट यू वॉन्ट टू अर्न। मतलब your earning ability, your ability to get results for which people will pay you the kind of money that you want to earn is central to your achievement of your financial goals. Look around you, अपने आसपास देखो, who is earning the kind of money that you want to earn? वो कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं आप जितना चाहते हो उतना? What are they doing differently from you? वो आप लोगों से क्या अलग कर रहे हैं, उसे देखो। What special skills or ability do they have that you currently lack? मतलब क्या एबिलिटी उनके पास है और हमारे पास वो नहीं है, उसको देखो, सीखो। एंजाइटी से नोजिया लगा, दिन नर्वसनेस से हो गया कांड, उल्टी क्यों नहीं, ये बताओ क्या किया? इफ़ यू आर नॉट श्योर, गो एंड आस्क देम। इन मोस्ट केसेस दे विल बी प्लीज टू टेल यू। मेक अ लिस्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दैट यू वुड हैव इफ़ यू वर वन ऑफ द टॉप पीपल in your field and one of the highest paid. Organize the list in your order priority from the most important to the least important. Take action today to begin learning what you need to learn to achieve the financial goals that you have set for yourself. तो आपको जो चीज़ आपकी मंजिल तक ले जाए, फाइनेंशियल गोल्स तक, जो आपके गोल हैं कि मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है, उस गोल के पास जो स्किल आपको ले जाए, आपको पता है वो कौन सी स्किल है? नहीं पता तो जो आप सीखना चाहते हो उसको पेपर में लिख दो एक बार, और उनमें से सबसे बेस्ट स्किल को चुनो जो कि आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे मतलब टॉप के लेवल तक पहुंचा सकती है, तो उसे सीखो जितना जल्दी हो सके। डिटरमाइन द पीपल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज कोऑपरेशन यू विल रिक्वायर।
Identify the people in your work life who can help you and whom you can help in return. आप उनको पकड़ो जो कि आपकी मदद कर सकते हैं और आप उनकी रिटर्न में मदद कर सकते हो. ऐसा होता है ना, आपने किसी को पकड़ लिया, दूध वाले भैया को, आप उसकी मदद कर सकते हो, वो आपकी क्या मदद करेगा, समझ लो, मतलब एक तरह से, ठीक है. आप उसको पैसों से मदद कर सकते हो, बट वो आपको क्या कैसे मदद करेगा. एक एग्जांपल ले लो, दूध आपको नहीं चाहिए, समझ लो दूध आपको नहीं चाहिए, तो वो आपको कैसे मदद करेगा, नहीं कर सकता ना. तो आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को ढूंढो जिनकी मदद आप कर सकते हो और उनसे मदद भी ले सकते हो. Make a list of name of people such as your boss, your co-workers, your peers. List your customers, suppliers, vendors and sources of money. To achieve anything worthwhile in life, you will have to have the help and supports of lots of people. The way you get their support is by becoming a goal giver. Look for ways to help other people to earn their support and cooperation before you ask them to help you. पहले गो गिवर बनो, पहले लोगों की मदद करो, उसके बाद अपना फेवर मांगो. पहले लोगों की हेल्प तो करना सीखो. इन लाइफ मोस्ट पीपल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिसी प्रिंसिपल. ज़्यादातर लोग क्या होता है, एक्सपेंडिसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. एंड व्हाट इज एक्सपेंडिसी प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल सेज दैट पीपल टेंड टू सीक द फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू गेट द थिंग्स they want immediately, with little concern for the long-term consequences of their actions. Put another way, people act to benefit themselves and think of themselves and their interest first, foremost in the most situation. अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो बाकी लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, जो कि गलत है. देयर इंटरेस्ट फर्स्ट फॉरमोस्ट इन द मोस्ट सिचुएशन. ज़्यादातर वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें रखते हैं. योर जॉब इज़ टू थिंक इन टर्म्स हाउ अदर विल benefit from cooperation with you to help you achieve your goals. आपको ये सोचना है कि आप लोगों की मदद करके कैसे आप उनके साथ रिलेशन बनाएं ताकि वो भी आपकी मदद कर पाए. ये नहीं कि बस अपना ही अपना देख रहे हो. Your job is to think हो गया है. You will also need the cooperation and support of the member of your family. आपको अपनी फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए होगा. If you are going to have to work long hard hours to achieve your financial goals, keep the member of your family informed. अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके रखो. Explain to them how they will benefit. कैसे आप बेनिफिट करोगे. Plan rewards, gifts and vacations around accomplishment of the financial milestone in your life. Be sure that everyone close to you is on board with you in the achievement of your financial goals. To get the help and cooperation of others, you must continually tune into each person's favorite radio stations. WFM, what in it for me? क्या होगा उसके अंदर? Make a plan you need to track to run on. You have now determined what you want, where you are starting from, and when you want to achieve each of your goals. You have determined the obstacles that you will have to overcome, the additional knowledge and skills that you will have to acquire, and the people and group whose cooperation and support you will need. You are now ready to develop your plan of action. Based on the above information, make a list of every step that you will have to take to achieve your financial goals. Organize the list by sequence. What you will have to be before you do something else, and the order in which you will have to take these actions. Organize your list by priority as well. Determine what is more important and what is less important by using the 20-80-20 rule. अब क्या होता है, एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज करो, डिटरमाइन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट बाय यूजिंग द 80-20 रूल. Discipline yourself to start work first on those activities that are the most important of all and put off other activities until later. क्या बात है, फिफ्थ गोल भी आ गया. Fifth medal for India in Deaf Olympics. A 14-year boy wins gold in men's 10-meter air pistol. 14 साल का बच्चा. Thanks a lot Mohan Kantalia for the biggest news of the day. Fifth medal. क्या बात है, इस मैसेज को तो पिन कर देता हूँ, जो आएगा सब देखेगा. अभी डालता हूँ, अभी अपडेट भी डाल दूंगा. आफ्टर दिस लाइव स्ट्रीम आई विल अपलोड द न्यूज़ ऑन माई पहाड़ी बिजनेस चैनल. इट इज़ थर्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन डेफ ओलंपिक्स. क्या बात है, शानदार, बहुत ही अच्छा न्यूज़ मोहन कंठालिया लेकर आए हैं हमारे लिए, धन्यवाद.
Now you have a goal and plan. आपके पास एक goal है, एक plan है. By gathering the above information and thinking through your answers to these questions and putting them down on paper, you increase the likelihood of your achieving your financial goals by 10 times. By more than 1,000%, you know have a roadmap. अब क्या है? Now you have a goal and plan. आपके पास goal है, plan है. By gathering the above information and thinking through your answer to these questions and putting them down on paper, you increase likelihood of your achieving for your financial goals by 10 times. मतलब अब आपके पास प्लान है, गोल है, आप इन सारे क्वेश्चंस को लिखो, प्रायोरिटाइज करो, डिसिप्लिन करो अपने आप को, और चीज़ों को, जो स्किल्स आप सीखना चाहते हो उसे लिख कर शुरू करो. आपके 10,000% चांसेस बढ़ जाएंगे जब आप उन चीज़ों को लिख कर करोगे. तो लिख कर करने का मतलब कि मेरा ये गोल है, मुझे इतना करना है और आज मैंने इतना अकम्प्लिश कर लिया है और अभी इतना बचा है. तो आपको वो चीज़ नोटिस होती रहेगी. अलार्म जैसे आपने देखा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, अलार्म आपने सेट कर दिया तो होता है ना कि सुबह उठा ही देता है हमें किसी न किसी तरह. एंड अ schedule to guide you and against which you can compare your activities and success. When you set off to achieve financial independence, it can seem like an overwhelming task. But when you break down your large long-term goals into small, bite-sized pieces, the tasks become more realistic, believable and achievable. You may not be able to achieve the whole goal at once. आप कभी भी पूरा गोल एक साथ नहीं अचीव कर पाओगे, but you can take a single step, and it is your willingness and ability to take the first step and that makes everything else possible. 11. Visualize, create a clear mental picture of your goal as already achieved. You have to see it before you can achieve it. The greater clarity you have is regard to how your life will appear when you are financially independent. The faster you will move towards your goals and the faster it will move toward you. जितना आप उसकी तरफ बढ़ोगे वो उतना ही आपकी तरफ बढ़ेगा. ठीक है. विजुअलाइज, क्रिएट अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ योर गोल एज ऑलरेडी अचीव्ड. अपने दिमाग में उसको सोच लो कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है. सारे मैसेज रिट्रैक्ट कर लिए, मैं पढ़ूंगा क्या, आगे देखता हूँ. यू हैव टू सी इट बिफोर यू कैन अचीव इट. आपको पहले अचीव करने से पहले आपको देखना होगा, विजुअलाइज करना होगा कि आप बन चुके हैं वो. द ग्रेट क्लियरिटी यू हैव विद रिगार्ड टू हाउ योर लाइफ विल अपेयर व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप अपनी लाइफ को कैसे देखोगे जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. द फास्टर यू विल मूव टूवर्ड योर गोल एंड द फास्टर इट विल मूव टूवर्ड्स यू. वन ऑफ दीज एक्शन यू कैन टेक to enhance your power of visualization is to create a financial freedom poster. Get a large posters board or whiteboard that you can look at on a regular basis and begin to cut out pictures of the different things you would have in your life if you were already financially independent. Cut out pictures of homes, cars, boats, vacation destinations, clothes, jewelry, furniture and everything that you come across that you would like to have in your life sometimes in the future if you had no financial limitations at all. मतलब सोचो, कट आउट पिक्चर्स, उन पिक्चर्स को काट लो, चाहे वो घर की हो, कार की हो, बोट की हो, वेकेशन डेस्टिनेशन हो, क्लोथ्स हो, ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, everything that come across that you would like to have in your life sometime in the future if you had no financial limitation at all. तो वो सारी चीज़ों की कटआउट्स बना लो. जैसे आपको चाहिए ये पैसा, गाड़ी, घर, वेकेशन डेस्टिनेशन, क्लोथ्स, ज्वेलरी, उन सब की कटिंग्स चिपका लो अपनी दीवार पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कम अक्रॉस दैट यू वुड लाइक टू हैव इन योर लाइफ sometime in future if you had no financial limitation at all. Put a picture of yourself and your family in the middle of the poster and tape all the pictures in the space surrounding your photograph. Look at the poster regularly. Imagine that everything that you can put up on this poster is ultimately achievable for you. अब क्या है, उसने बोला एक पिक्चर लगाओ यहाँ पर. ठीक है, अपने गोल्स के आसपास यहाँ पर बना दो आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, और उसके नीचे अपना साइन कर दो और उसे रोज देखो ताकि आप उस गोल के पीछे काम करो. It will only be a matter of time before you create it or attract it into your life. और एक दिन ऐसा आएगा वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में. Imagine how would you feel living in that particular house or taking that particular vacation as you allow your eyes to wander over your pictures. Create within yourself
attitude of calm, positive expectations that everything will be realized at exactly the right time for you. Back everything you do with unshakable persistence. Resolve in advance that you will never ever give up. Once you have determined your financial goals, resolve in advance that you will persist until you succeed. अब क्या है, back everything you do with unshakable persistence, resolve in advance that you will never ever give up. बस इतना याद रखो कि आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, पूरी दुनिया आपको हिला दे, बट आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है. मेक अ डिसीजन दैट यू विल ओवरकम एवरी प्रॉब्लम. आपको ऐसा डिसीजन बनाना है कि आपको हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर दो. सेट बैक, डिफ़िकल्टी एंड एडवर्सिटी until you financially win through and achieve your financial goals. ठीक है, हर प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, हर सेटबैक से आगे निकलना है, हर डिफ़िकल्टी को ख़त्म करना है, एडवर्सिटी को बढ़ाना है, until you finally win through the achieve your financial goals. मतलब अपने गोल्स को जब तक अचीव ना कर लो तब तक वो सारी चीज़ें से दूर भागना है आपको, ऑब्स्टिकल से, मतलब ओवरकम करना है बेसिकली, दूर नहीं भागना है, ओवरकम करना है. Remember, when you set a big goal or set of goals for yourself, you are setting yourself up for frustration, failures, setbacks, difficulty, temporary defeat. These experiences go along with the territory. It is impossible to succeed without these failures. अब क्या है, हम लोग कभी कभी बड़े सेट कर देते हैं गोल. जैसे आप समझ लो कि आपने सेट कर दिए इस महीने में 1 मिलियन आपको वो चाहिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, विच इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक महीने में करना. बट जहाँ जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है वहाँ पॉसिबल भी हो सकती है, बट हम लोग जब उस इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव नहीं कर पाते ना तो हम लोग निराश हो जाते हैं. रिमेंबर, व्हेन यू सेट अ बिग गोल और सेट ऑफ गोल्स फॉर योर सेल्फ, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फ्रस्ट्रेशन, फेलियर एंड सेटबैक्स, डिफिकल्टीज एंड टेम्पररी डिफीट. आप ये सब अपने लिए कर रहे हो. These experiences go along with the territory. ये आपके साथ ही चलते जाएंगे. It is impossible to succeed without these failures. और कब ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो, टेम्परेरी डिफीट, डिफ़िकल्टी, सेटबैक, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, और ये सारे फेलियर्स होने के बाद आप इम्पॉसिबल है कि आप ये सब बन पाओ. However, the good news is that within each obstacle or setbacks will be the seed of an equal or greater advantage or benefit. Every problem or difficulty you experience will contain a lesson that, once learned, will help you to achieve your goals more surely in the future. Your job is to focus on the lesson and what you can learn rather than on the problem and how it might be holding you back. There are no limitations on what you can achieve except for the limitations that you place on your own mind. Difficulties come not to obstruct but to instruct. When you resolve in advance to learn from every expenditure, your ultimate financial success becomes inevitable. अब ये क्या लास्ट की बात क्या कह दी? There are no limitations on what you can achieve except for the limitation that you place on your own mind. अब क्या होता है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जो चीज़ आप चाहिए आप वो कर सकते हो, बस आपकी जो लिमिटेशन है वो दिमाग में होती है. ठीक है. डिफ़िकल्टीज एडवांस टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस. अब डिफ़िकल्टीज जो होती है ना, डिफ़िकल्टीज़ कम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट बट टू इंस्ट्रक्ट. जितनी भी, क्या अच्छी बात कही है, ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं आती है, हमें कुछ नया सिखाने के लिए कहती है. व्हेन यू रिजॉल्व इन एडवांस टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, योर अल्टीमेट फाइनेंशियल सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल. Set and achieve all your financial goals. Determine your exact net worth today so that you are clear where you are starting from. Decide exactly how much you want to earn per hour, month, and year in the next 1, 2 years, or 3, 4 years. Create a plan to get out of debt by living on less than you earn. What expenses are you going to cut back? Decide how much you would need to live comfortably each month if you had no income at all, and use that numbers as the basis for your financial planning. Begin to study and learn about money, how to earn more of it, and how to make it grow. Ask other successful people for advice, especially before you invest any of your money in a business or in a real estate. Set a goal to save 10 to 20% of your income for the rest of your working lifetime. Make financial independence a top priority.
अब आपको क्या करना है, सेट गोल्स टू सेव 10 to 20% ऑफ योर इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ योर वर्किंग लाइफ टाइम, मेक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अ टॉप प्रायोरिटी, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आपको चाहे कुछ भी कर लो, अगर जब तक आप अपनी फील्ड में बेस्ट नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। द अनकॉमन मैन इज merely द कॉमन मैन थिंकिंग एंड ड्रीमिंग ऑफ सक्सेस एंड इन मोर फ्रूटफुल एरियाज, like the army recruiting posters, one of your goals is to be all that you can be. अब क्या होता है, जो आर्मी रिक्रूटिंग पोस्टर होता है, वन ऑफ योर गोल इज टू बी ऑल दैट यू कैन बी, मतलब आप जो बन सकते हो उसके बारे में सोचो। द मार्केट पेज एक्सेलेंट रिवॉर्ड्स ओनली फॉर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। जितना भी मार्केट है वो किसको पैसा देता है, उसी को देता है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो। कभी देखा है किसी लोअर परफॉर्मर को आपने बेस्ट अवार्ड ही मिला हो? कभी नहीं मिलता। इट पेज एवरेज रिवॉर्ड फॉर एवरेज परफॉर्मेंस। हर बंदे को एवरेज के लिए एवरेज मिलेगा, बेस्ट के लिए बेस्ट मिलेगा और लोअर के लिए ताने मिलेंगे। द बिलो एवरेज रिवॉर्ड्स अंडर अचीवर फेलियर फ्रस्ट्रेशन फॉर बिलो एवरेज रिजल्ट। जिनका बिलो एवरेज रिजल्ट आता है उनके लिए क्या है, अंडर अचीवर का टैग मिलता है, फेलियर मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलती है। In our economic system, your income will be determined by 3 factors. First, what do you do? Second, how well you do it. And third, the difficulty of replacing you. One quality of the most successful people is that at a certain point in their careers, they decided to commit to excellence. They decided to be the best at what they do. They decided to pay any price, make any sacrifice, and invest any amount of time necessary to become very good in their chosen field. मतलब हर एक चीज़ को वो एक सेक्रीफाइस करते हैं, डिसाइड करते हैं पे करने का उस प्राइस को हर जगह जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट बन जाए उस फील्ड में, चाहे उसके लिए पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ जाए। एंड इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ टाइम नेसेसरी टू बिकम वेरी गुड इन देयर चोजन फील्ड. And as a result of this decision, they pulled away from the pack of average performance and moved themselves upward into the income category, where today they earn 3, 4, 5, and 10 times as much as their peer who have not made this commitment. The 80 to 20 rule reinvested. अब क्या है, revisited. When I started my sales career many years ago, someone told me about 80-20 rule as it applied to sales. He said that 20% of the sales people made 80% of the money. This means that 80% of the sales people make 20% of the money and they have to divide it among themselves. At that point, many years ago, I decided that I would prefer to be member of top 20% rather than bottom 80%. देखो अब क्या होता है आजकल, क्या 80-20 है, 80 लोग गरीब हैं, 20% अमीर है, तो आपको डिपेंड करना है कि किस में जाना है। अब ये कह रहा है एक बार 80-20 वाला रूल विजिट कर लेते हैं. When I started my sales career many years ago, someone told me about 80-20 rule as it applied to sales. Sales में 80-20 रूल चलता था. He said that 20% of the sales people made 80% of the money. अब क्या है, 20% people थे जिनमें से जो 80% कमाते थे. This means 80% of the sales people make 20% of the money. मतलब बाकी जो 80% था वो 20% ही कमाते थे पैसों को, and they have to divide it among themselves, और आपस में ही बांट लेते थे. At that point many years ago I decided that I would prefer to be a member of top 20% rather than the bottom 80%. The decision changed my life forever because I had come from a difficult childhood and received below average grades in school. I grew up with a poor self-image and a low level of self-confidence. It never occurred to me that I could be at anything. If I ever attempted something and did it well, I immediately dismissed it as an accident or a lucky break. For years I saw myself as an average or below average performer in any job I worked at. The great insight. Then one day I had sudden flash of sight. I realized that everyone who is in the top 10% of his or her field started in the bottom 10%. Everyone who is doing well today was once doing poorly. Everyone who is at the front of buffet line of life started at the back of the line. And even more importantly, it dawned on me that whatever others have done within reason I could do as well.
जो बाकियों ने किया मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ. एंड दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू फॉर जस्ट अबाउट एवरीवन. नो वन इज़ बेटर देन यू एंड नो वन इज़ स्मार्टर देन यू. कोई भी आपसे ज़्यादा बेटर नहीं है, कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्टर नहीं है. पीपल आर जस्ट बेटर और स्मार्टर इन डिफरेंट एरियाज. इन एडिशन ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल. और जितनी भी बिजनेस स्किल्स है वो लर्नेबल है. ऐसी कोई स्किल ही नहीं है जिसको आप सीख ना पाओ यार. People who are doing better in some areas of business have learned the essential skills in combination with other skills before you have. अब क्या होता है, जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हैं उन्होंने क्या किया, एसेंशियल स्किल्स सीखी और अपनी जो स्किल्स उनके पास थी उनको कंबाइन करके कुछ नई स्किल्स बनाई और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. If you are not achieving what others are achieving, it simply means that you have just not learned these skills yet. अगर लोग जो कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, आप उतना नहीं कमा पा रहे इसलिए क्योंकि उन्होंने वो स्किल सीखी है और आपने नहीं सीखी. सिंपल. नो रॉकेट साइंस इन आयरन लॉ सेल्फ डेवलपमेंट. अब आयरन सेल्फ लॉ डेवलपमेंट क्या है, आयरन लॉ क्या है? Here was another breakthrough realization for me. You can learn anything you need to learn to achieve any goal you can set for yourself. मतलब इस दुनिया में आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो. ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव ना कर सको. ऐसी कोई स्किल नहीं है जो कि आप उसे यूज़ ना कर सको, मतलब सीख ना सको. हमें हमारा माइंडसेट होता है कि हम ये सीख नहीं सकते, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हमने अपने माइंड में प्री सेट कर लिया है. मैथ्स हार्ड लगती है क्योंकि हमने उसे अपने दिमाग में हार्ड बनाया है. और अगर हम बोल दें मैथ्स इज़ ईजी और मैथ्स को करने लग जाए, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दो क्वेश्चन नहीं होंगे, तीसरा हो जाएगा. बिलीव इन योर सेल्फ और बोलो कि मैं कर सकता हूँ. धीरे धीरे 2-4 बार आंसर गलत आएंगे और 5वीं बार ठीक आएगा. देयर आर नो रियल लिमिट्स ऑन वॉट यू कैन अकम्प्लिश एक्सपेक्ट फॉर the limits that you place on your own mind and imaginations. If you decide to become excellent, to join the top 10% of the people in your field, nothing on earth can stop you from getting there except yourself. Will it be easy? Of course not. I don't promise that anything in this book will be easy to do. वो कह रहे हैं ऐसी कोई इस बुक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ईजी हो. Everything worthwhile takes a long time and a lot of work to accomplish, but it is possible if you want it badly enough and are willing to work long enough, and it is worth every bit of effort once you get there. Les Brown, the motivational speaker, says to achieve something that you have never achieved before, you must become someone that you have never been before. John Wolfgang von Goethe, the German philosopher, said to have more you must first be more. Once you decide to become one of the best people in your field, the only question you ask is, how do I achieve it? The very fact that hundreds of thousands and even millions of people have gone from the bottom to the top in every field is. अब क्या होता है, once you decide to become one of the best people in your field and the only question you ask is, how do I achieve it? मतलब आप कैसे अचीव करोगे, एक ही क्वेश्चन बचता है. जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी फील्ड में बेस्ट बन के दिखाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन बचता है, हाउ डू आई अचीव इट. द वेरी फैक्ट दैट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स एंड इवन मिलियन ऑफ पीपल हैव गॉन फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इन एवरी फील्ड इज एम्पल प्रूफ that you can do it as well. Many of these people is not, if not most of them, may not even have the natural talent and abilities that you have. In most areas of life, it is more hard work and dedication than natural ability and talent that led to excellence and great success. कितनी अच्छी बात कही है कि यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी जगहों में आपको ये देखने को मिला है, जितने लोग पैदा हुए हैं टैलेंट के साथ, उससे कहीं ज़्यादा मेहनती लोग सक्सेसफुल हुए हैं. जिन्होंने पैदा होने के बाद उनके पास कोई स्किल नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की, कंसिस्टेंट रहे, दिन रात एक कर दिया और फाइनली वो मैच जीत गए या फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स के बहुत करीब पहुंच गए, है ना. आगे बढ़ते हैं. इज़ एजुकेशनल एसेंशियल फॉर सक्सेस. क्या पढ़ाई ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए? कुछ लोग कहते नहीं भाई हमने तो बिना पढ़े पहुंच गए यहाँ तक, ऐसे ही हो, ये बिना पढ़ाई के ही हो जाता है यार, हम तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ये है वो है. ऐसा नहीं होता. देखो, in an analysis of members of Forbes 400 richest men and women in America conducted several years ago, researchers found that a person who dropped out of high school who made it into Forbes 400 as worth of 333 million more than those who had completed college or university. अब क्या होता है, कुछ लोग
ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कंप्लीट तो कर ली पर वो पैसा नहीं कमा पा रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट हैं और $333 million है उनके पास. द रीज़न आई मैंशन दिस इज बिकॉज मैनी पीपल फील दैट इफ दे डिडंट गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल दे are permanently limited in what they can accomplish later in life. Nothing could be further from the truth. Some of the wealthiest, most successful men and women in America and throughout the world did poorly in school. Remember the question, how do you eat an elephant? How do you eat an elephant? And the answer, one bite at a time. अगर आपको एक हाथी को खाना है तो कैसे खाओगे? One bite at a time, ऐसा कह रहे हैं. मतलब या तो आप सोच लो कि एक बड़ी सी वेल है, आपको वेल को खाना है, कैसे खाओगे? पूरी वेल को तो एक बार में नहीं निकल सकते ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओगे, वन बाइट एट अ टाइम. तो अपने बड़े से गोल को एकदम कैसे अचीव कर लोगे? होता है ना, अगर मैंने आपके सामने एक बड़ा डोसा रख दिया, मैंने कहा खा के ख़त्म करो 1 सेकंड में, इज़ इट पॉसिबल? नहीं खा सकते ना. तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं है. अगर आपने 1 लाख रुपए कमाने का सपना देखा है तो रातों रात तो नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, तभी तो होगा. सोते सोते तो पैसे अपने आप नहीं उड़ के आएंगे आपके पास या मेरे पास. दिस इज द सेम विद दैट यू बिकम एब्सोल्युटली एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू. यू मूव टू द टॉप वन स्टेप, वन स्किल, वन स्मॉल इंप्रूवमेंट एट अ टाइम. तो हम लोग चाहे कोई भी थोड़ा सा एक स्टेप अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ करो और आगे और मेहनत करो. एक चीज़ अच्छी कर रहे हो, एक स्किल आपने अब अच्छी की है, दूसरे को और बढ़ाओ. वन स्मॉल इंप्रूवमेंट एट अ टाइम. एक छोटी इंप्रूवमेंट भी हो रही है वो आपके लिए बढ़िया है. आर यू एन अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग एसेट? क्या आप एक अप्रिशिएटिंग या डिप्रिशिएटिंग एसेट हैं? द फैक्ट इज दैट योर करंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज बिकमिंग obsolete at a faster rate today than ever before. I mentioned earlier that your earning ability can be appreciating और depreciating asset. आपकी जो अर्निंग एबिलिटी है वो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट यू आर अपग्रेडिंग इट और सिंपली अलाउइंग इट टू बिकम ऑब्सोलीट. बिल्कुल ख़त्म कर दोगे या फिर उसे बढ़ाओगे. दिस इज अ चॉइस यू आर मेकिंग और फेलिंग टू मेक एवरी डे. आप या तो उसे बनाओगे या तो उसे गवाओगे. द गुड न्यूज़ इज दैट व्हेन यू स्टार्ट to aggressively upgrade your knowledge and skills on the road to becoming one of the best people in your field, it will be as if you are in a race and you are the only one who is really running. You very soon move ahead of the pack and into the lead position. अब क्या है कि आप लीड पे काम करोगे. Meanwhile most of your competitors are simply strolling along, doing just what they need to do to keep their jobs. The ideas of committing to excellence has never even occurred to them. Identify the knowledge you will need. You begin your journey to excellence by asking the questions, what additional knowledge, skills, information will I need to lead my field in the months of years ahead. Project yourself forward 3 to 5 years and imagine that you are one of the very best, highest paid people in your industry. What would need to have happened? What would you need to have done, learned or accomplished to reach this point? What skills would you have had to master to lead your field? ठीक है. Make a career move. Once upon a time, I had a good friend who was a lawyer in a small firm. His father had been a lawyer, so my friend had taken law when he went to the university. When he got out of the school in his early 20s, he began practicing law among his friends and associates. But he soon decided that law was not for him. He decided to make a career in business instead. By this time, he was about 26-year old. In the face of considerably opposition, he gathered all these resources and concentrated single-mindedly on getting into Harvard University to attend its MBA program. It took time. It took him 2 years, but he finally was accepted. It then took him 2 more years to complete the required course and graduate with a coveted Harvard MBA.
He returned to his home city and interviewed for various jobs, finally taking an entry level management position at a rapidly growing airline. It turned out to be a perfect career move. Within 10 years, he was president of the airline and earning 10 times as much as any lawyer that he had graduated with some years before. He became one of the youngest and most respected executives in charge of the major company in the country. It is almost inevitable that your career will change continually as you grow and mature. आपका जो करियर है वो ग्रो भी होगा, मेच्योर भी होगा. You must be consistently looking down the road and thinking about skills and competencies you will need to earn the kind of money you want to earn in the years ahead. Identify your key result areas. As I mentioned before, every job is made up of about 5 to 7 key result areas. In sales, for example, these 7 key result areas consist of: first, prospecting; second, establishing rapport; third, identifying needs; fourth, presenting solution; fifth, answering objections; sixth, closing the sale; seventh, getting resale and referrals from the satisfied customer. अब क्या है? आइडेंटिफाई योर की रिजल्ट एरियाज. की रिजल्ट एरिया क्या है आपका? एज आई मैंशन बिफोर, एवरी जॉब इज मेड अप ऑफ 5 to 7 की रिजल्ट एरियाज. 5 या 7 की रिजल्ट एरिया होते हैं. पहला, इन सेल्स में क्या होता है? एग्जाम्पल, दीज 7 की रिजल्ट एरियाज कंसिस्ट ऑफ: फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिंग; सेकेंड, इस्टेब्लिशिंग रेपोर्ट, मतलब थोड़ी रेपो बनाना; थर्ड, आइडेंटिफाइंग नीड्स, मतलब लोगों की क्या नीड है उन्हें आइडेंटिफाई करना; फोर्थ, प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, जब आपने दूसरों की नीड्स पहचान ली तो उसका सोल्यूशन क्या है; आंसरिंग द ऑब्जेक्शंस, और फिफ्थ है उनके आंसर को जो वो ऑब्जेक्ट करते हैं उसका आंसर करना; सिक्स, क्लोजिंग द सेल, मतलब सेल कर दो; सेवंथ, गेटिंग रीसेल, और रीसेल करो, और मतलब आपको रीसेल मिलेगी. सेल करते हैं तो लोग कहते नहीं है यार इसके मोमोज अच्छे थे, अब इसी के खाएंगे, तो रीसेल होगा. फिर उसके बाद रेफरल फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर. बाकी रेफरल्स लो जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं. If you are in sales, you should give yourself a grade of 1 to 10, with 1 being the lowest and 10 being the highest in each of these areas. You need to have minimum score of 7 across the board to be in the top 20% of your field. Once you have graded yourself in the 7 areas, you should take the list to your boss, or even better, to one of your customers, and ask that your person to give a grade as well. This could be a real eye-opener for you. Very often the way you evaluate yourself is much different and higher than the way you are evaluated by others. Whatever your financial grades, you must then select your weakest key link and work on that skill so that it is equal to or greater than the others. Your weakest key skills sets the highest of your incomes and determines how fast and how far you go in your careers. Move on to the fast tracks. Here is a great question for the rest of your working life. What one skill, if you developed and did it in an excellent fashion, would have the greatest positive impact on your career? This should become your focal point for personal and professional development. If you are at all unsure about the answer to this question, go to your boss and ask him to or her. Ask your co-workers, ask your staff, ask your spouse and your friends. It is absolutely essential that you find out the answer to this question and then focus all your energies on improving your performance in the particular areas. This becomes your major definite purpose for personal and professional improvement. Write it down, set a deadline, make a plan, take action on your plan, and then do something every day to get better in this particular skills. Once you have achieved mastery in your weakest key result area, then ask the question again. Now, what one skill will help me the most? And whatever your answer to that question, to go to work on that skill until you achieve mastery in that area as well. The highest paid people in every field score an 8, 9 and 10 across the board in each of their key result areas. This must be योर गोल. मतलब जितने भी लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपनी फील्ड में क्या करते हैं, 8, 9 या 10 पॉइंट लेते हैं 10 में से. तो
तो आपको भी वही गोल लेना है. The excellent executive. If you are in management, 7 key results are determine your success or failure at your job. These areas: planning, organizing, staffing, delegating, supervising, measuring, and reporting. All successful managers are excellent in every one of these areas. All unsuccessful managers are weak in one or more of these areas. A serious weakness in any one of these key result areas can be fatal to your success in your work. For example, if you were absolutely excellent in every part of managing except for delegating, that would hold you back every day of your career. I have worked with managers who were so poor at delegating that they could get nothing done. They eventually had to be fired because of the damage they were causing to the rest of the business. Give yourself a grade of 1 to 10 in each of these key result areas. Ask people around you to grade you as well. And be honest, seek the truth rather than a diplomatic answer from a polite coworker. Perform a 360-degree analysis. One of the popular management tools being used today is called 360-degree analysis. In this type of analysis, a survey is given to several people who report to a particular manager plus the managers and co-workers. The survey is filled out anonymously and all the surveys are returned to an outside consultant who summarizes the answers. This summary is then given to the manager so that he or she can see how he or she is perceived by others. It often comes as quite a shock to the manager. For example, the manager will say, I make careful and thoughtful decisions, but the staff will say, he is weak, indecisive, and insecure when it comes to making decisions. We have a new natural tendency to rate ourselves very highly. हमारे पास natural tendency होती है कि हम अपने को हमेशा 100 out of 100 ही देते हैं. No matter what the quality or characteristics, हमारी क्या quality है, क्या characteristics है, पर हम अपने लिए best हैं. This is why it is so helpful for a person to be rated by his or her peers on a regular basis. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो हम लोग अपने आप को बाकियों से रिव्यू करें. मतलब फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने 10 लोगों से पूछो कि आज का व्लॉग कैसा लगा. अपने बाकी लोगों से भाई तारीफ मत करो, कोई कमी हो तो वो बताओ. ठीक है. सेट पर्सनल इंप्रूवमेंट एज अ गोल. अपनी पर्सनल इंप्रूवमेंट को गोल सेट करो. आपकी खुद की पीआई करो. पर्सनल इंप्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू हैव डिटरमाइन द की रिजल्ट एरिया वेयर यू वांट टू नीड to improve the most, set this improvement as a goal. Make a plan, determine a standard, and set a deadline. Then go to work to improve yourself in that area every day. In a week, a month, or a year, you will be absolutely excellent in that area. You will have become an expert. Accept yourself the way you are. One of the most popular business books in recent areas is called Now. Discover Your Strengths. This book follows from an earlier bestseller, First Break All the Rules. The common conclusion of both of these books is people don't change. You are born with certain natural skills, abilities, tendencies, strengths, weakness, and talents. These emerge in early life and usually crystallize in your late teens. They do not change very much over the course of your lifetime. One of the most important steps you to take in your career is to identify what it is that you are really good at or what you can become good at, and then put your whole heart into becoming excellent in that area. पहले सोचो क्या करना है और उस चीज़ को इतने दिल से करो कि उसमें आप एक्सीलेंट बन जाओ. समझ रहे हो? Mary Parker Follett, a management consultant in the 1920s, once wrote, "The very best direction to ride a horse is in the direction it is going." सबसे बेस्ट डायरेक्शन घोड़े को चलाने का क्या है? जिस डायरेक्शन में घोड़ा चल रहा है उसी में चलाओगे तो गिरोगे नहीं. The very best way to develop yourself in the direction of the natural talents and interest. तो बेस्ट आपके लिए क्या है? कहाँ काम करना? जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है और नेचुरल टैलेंट है आपका. जिम कैथकार्ट कहते हैं, द ऑथर एंड स्पीकर सेज, नर्चर योर नेचर. आपने नेचर को नर्चर करते रहो. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट यू शुड फॉलो थ्रू आउट योर करियर. अपने पूरे करियर में आपको ये चीज़ करनी होगी. यू वर पुट ऑन दिस अर्थ with special talents and ability that makes you unique and different from all the other people
who have ever lived. Throughout your life, you have often found yourself drawn to an area of activities where your special talents and abilities have enabled you to accomplish more, to enjoy what you are doing at a higher level than anything else you could do. One of your great goals in life is to identify and isolate the one or more skills that you can do better and enjoy more than anything else, and then concentrate on becoming absolute excellent in those areas. Develop your talents. Develop your talents. Michael Jordan, the basketball player, once said, "Everybody has talent, but ability takes hard work." The poet Longfellow once wrote, "The great tragedy of the average man is that he goes to his grave with his music still in him." You could struggle for years at a job for which you were ill suited and then find yourself in the perfect field and make more progress in a couple of years than you had made in the 20 years preceding. Napoleon Hill once wrote that the key to success in America is for you to find out what you really love to do and then find a way to make a good living doing it. अब देखो क्या होता है, नेपोलियन हिल्स ने क्या कहा है, सक्सेस ऑफ अमेरिका इज़ फॉर यू टू फाइंड आउट वॉट यू रियली लव टू डू. आपको क्या चीज़ पसंद है जिसमें आप ज़िंदगी भर उसको कर सकते हो, एंड देन फाइंड अ वे टू मेक अ गुड लिविंग इन इट. मतलब पहले अगर आपको सोचो कि आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो आप उसमें पहले बहुत अच्छा करिए, सारी नॉलेज गेन करिए, देन उसके बाद उसी में कुछ ऐसा काम कर दीजिए ताकि आप उससे पैसा भी कमा पाएँ, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको मज़ा भी आएगा, काम भी करोगे, कोई टेंशन भी नहीं होगी. What they did was to find out what they really enjoyed. पहले उन्होंने ये देखा कि उन्हें मज़ा किस में आता है, and then they did more and more of it. और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किया, ज़्यादा से ज़्यादा किया और उसको जीत हासिल कर ली. Identify your special talents. अपने special talents को पहचानिए. There are 8 ways for you to identify and determine your special talents or talents and what you are uniquely suited to do. Here they are. First, you will always be the best and happiest at something that you love to do. If you could afford it, you would do it without pay. It brings out the very best in you, and you get a tremendous amount of satisfaction and enjoyment when you are engaged in that particular work. Second, you do it well. You seem to have a natural ability to perform in this area. Third, this talent has been responsible for the most of your success and happiness in your life up until now. From an early age, it has been something that you have enjoyed doing and has brought you the greatest rewards and accomplishment and compliments from the other people. Fourth, it is something that was easy for you to learn and easy to do. In fact, it was so easy to learn that you have actually forgotten when and how you learned it. You just found yourself doing it easily and well one day. Fifth, it holds your attention, it absorbs you and fascinates you. You like to think about it, read about it, and talk about it, and find out more about it. It seems to attract you like a moth to a flame. Sixth, you love to learn about it and become better at it all your life. तो बस वही चीज़ है, जितना आप उससे प्यार करोगे, जितना उसे करोगे और उसे उसके अंदर डीप चले जाओगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में और मज़ा आएगा. यू हैव डीपर इन अ डिज़ायर टू रियली एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सेवंथ, व्हेन यू डू इट, टाइम स्टैंड स्टिल. वो जब आप उसे कर लोगे तो टाइम रुक जाएगा. यू कैन ऑफन वर्क इन योर एरिया ऑफ स्पेशल टैलेंट फॉर long period without eating, sleeping hours after hours because you get so involved in it. And eighth, you really admire and respect other people who are good at what you are the most suited to do. You want to be like them and be around them and emulate them in every way. If the above descriptions apply to anything that you are doing now or anything that you have done in the past, they can lead you into what you were uniquely put on this earth to do, to your heart desires. You were born to excel. आप लोग क्या है, पैदा ही एक्सेलेंस को हासिल करने के लिए हुए हो. ठीक है. Hi Jimmy, how are you? Welcome back to the channel. Thanks for listening this live stream.
योर नेचुरल टैलेंट्स आर इनबॉर्न एंड ईजी टू डेवलप. आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो इनबॉर्न होता है और ईजी टू डेवलप होता है. दे आर प्रोग्राम इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब प्रोग्राम्ड है. दे आर वॉट यू वर पुट ऑन दिस अर्थ टू डू. आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो इस अर्थ में आके. योर जॉब इज़ टू डिस्कवर योर एरिया ऑफ नेचुरल टैलेंट. आपको अपने नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी को पहचानना होगा एंड देन डेवलप इट थ्रू आउट योर लाइफ. और उसको डेवलप करना है पूरी लाइफ में. ठीक है, मैनी स्किल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. बाकी जो स्किल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस मीन दैट यू मस्ट हैव वन स्किल एट अ सर्टेन लेवल इन ऑर्डर टू यूज योर अदर स्किल्स एट हायर लेवल. Sometimes you have to learn and develop skills that you do not particularly love and enjoy, but this is price you pay to be able to achieve excellence in your chosen field. One skill away. Here is a rule. You could be only one skill away from doubling your productivity, performance and income. You may only need to bring up your skills level in one area for you to be able to use all of your other skills at a higher level. आपको बस एक स्किल को इतना बेहतर बनाना है कि बाकी स्किल्स को आप हर जगह यूज़ कर सको. रिमेंबर दैट ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल. जितनी भी बिजनेस स्किल है, जितने भी स्किल हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है, सब सीखी जा सकती है. बिजनेस स्किल्स आर नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. ये कोई नहीं है कि वॉरेन बफेट का बेटा ही इन्वेस्ट कर पाएगा. यहाँ अदानी को देखो, वॉरेन बफेट को पीछे कर चुके हैं. If you need to learn any business skills to realize and utilize for full potential, you can learn it by practice and repetition. अगर आप उसको फुल पोटेंशियल के साथ सीखना चाहते हो तो आप उसे प्रैक्टिस करो, रिपीट करो और सीख जाओगे. अवॉइड द ट्रैप ऑफ द पुअर परफॉर्मर. ये जो पुअर परफॉर्मर का ट्रैप है उससे दूर भागो, उससे दूर ही रहो. आगे बढ़ते हैं. It is quite common that if you are weak in a particular skill, you will avoid taking action in that skill. अब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में वीक होते हो तो आप उसकी तरफ एक्शन भी कम लेते हो. You will fail into that trap and learn helplessness. You will say, I am not really very good in that area or I don't have any natural talent or ability in that skill. But this is merely rationalization and justification. If the skill is important enough to you, you can learn it. अगर वो चीज़ important है आपके लिए तो आप उसे सीख सकते हो, कोई बहाना नहीं चलेगा. The very worst decision of all is for you to allow yourself to be held back for months, for years, because you lack a single simple skill that is readily learnable through dedication and determination. Don't let this happen to you. तो जो चीज़ सीखी जा सकती है उसे सीखो, उसकी वजह से आप पीछे मत हो जाओ. Excellence is a journey. Excellence एक जर्नी है जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता. जर्नी को एक दिन में पूरा नहीं करते मेरे दोस्त, जर्नी लंबी चलती है. There is an old saying, anything worth doing well is worth doing poorly at first. अगर कोई भी चीज़ जिसको आपको हासिल करना है, पहले वो अच्छी तो सबको लगती है पर मुश्किल भी उतनी ही होती है. पर ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल हो. और हमेशा याद रखो, पहली जो कोशिश होती है ना मुश्किल चीज़ों की, वो ख़राब ही होती है. अगर आपने ज़िंदगी में स्केट्स चलाना सीखा होगा तो पहले गिरे ही होगे और उसके कुछ महीने बाद आप ऐसे स्केट्स चला रहे हो कि आप परफेक्ट हो चुके हो. पहले आप फुटबॉल खेलते होगे तो सब आपको मजाक उड़ाते होंगे, पर एक महीना प्रैक्टिस करने के बाद जो आप फुटबॉल खेलते हो तब आप हंसते हो बाकियों के गेम पर, है ना. तो वही चीज़ें होती है, जब आप स्किल्स को हासिल कर लेते हो तब वो आपके लिए ईजी हो जाती है. तब आप लोगों पे हंसते हो कि यार इससे तो ये पास भी नहीं हो रहा है, हद ही हो गई है, ऐसे कहाँ जीतेंगे हमारी टीम, है ना. होता है ना. तो जब कोई चीज़ आप सीख लेते हो तो आपके लिए वो ईजी होता है, बाकियों के लिए तो वो वैसा ही है जैसा आपके लिए कुछ साल पहले था. देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, एनीथिंग वर्थ डूइंग वेल इज़ वर्थ डूइंग पुअरली एट फर्स्ट. हर चीज़, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आखिरी में, वो चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी टफ होती ही होती है और पुअर परफॉर्मेंस ही रहती है स्टार्टिंग में सबकी. इट इज़ नॉट प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट, इट इज़ इम्परफेक्ट प्रैक्टिस दैट इवेंचुअली मेक्स परफेक्ट. Whenever you start something new, you can expect to do it poorly. जब भी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो मानकर चलो कि सब खराब ही होगा. You will feel clumsy and awkward at first. स्टार्टिंग में आपको बुरा ही लगेगा. मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ मुझे अजीब ही लगता है, बट उसके बाद जब मैं पढ़ने लग जाता हूँ, आई फील वेरी ग्रेट टू रीड दिस बुक. मतलब आज मैं एक गोल्स पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने स्टार्ट कर दी. स्टार्टिंग के कुछ 10-15 पेजों में मुझे बोरियत होती है, बट फिर उसके बाद अच्छा लगता है.
will feel inadequate and inferior. You will often feel silly and embarrassed, but this is the price that you pay to achieve excellence in your field. But वो चीज़ है जो कि आप प्राइस है वो आपका जो आप अपनी फील्ड में एक्सेलेंस करने के लिए दे रहे हो. यू विल ऑलवेज हैव टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके पास आ जाए, आपको सक्सेस का प्राइस देना ही पड़ेगा. And that price often involves the hard work of your mastering a difficult skill that you need to move to the top of your field. अपनी फील्ड में टॉप बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. दैट इज़ नेसेसरी. चाहे आपको अपना टाइम देना पड़े, फैमिली को दाव पे रखना पड़े, मतलब इन द सेंस कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, उस स्किल पे काम कर रहे हो, तो दैट इज़ सेक्रीफाइस. यू आर गिविंग योर फैमिलीज टाइम टू अ स्किल, तो ये भी तो एक सेक्रीफाइस ही हुआ. वेव योर मैजिक वैंड. अब क्या है, अपनी जादू की छड़ी को घुमाओ. यूज द मैजिक वैंड टेक्निक. अब मैजिक वैंड टेक्निक है क्या, देखते हैं. इमेजिन that you could wave a magic wand and be absolutely excellent at a particular skill. आप ऐसे छड़ी घुमाओगे और आप उस स्किल में परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा ये कह रहा है. ऐसा करके देखो. What would it be if you could wave a magic wand and have any wish at all with regard to your talent and skill? What would you wish for? आप अपनी मैजिक घुमाओ और आप ऐसी क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो, और वो अगर आपके पास छड़ी होती तो आप सीख जाते. तो आज वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो, उस छड़ी से पूछो कि भाई मेरे पास छड़ी है, मैं उससे सीख सकता हूँ. तो आपके मन में आएगा कि यार मुझे तो ये सीखना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, जो भी है. तो उस छड़ी को घुमाओ और बोलो सीख गया. ठीक है. अब क्या है, योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस विल ऑफन बी इंडिकेशन ऑफ द न्यू गोल्स दैट यू हैव टू सेट विद रिगार्ड टू द स्किल्स एंड एबिलिटी दैट यू नीड टू डेवलप टू बी द बेस्ट एट वॉट यू डू. Become a lifelong do it to yourself project. Be prepared to invest 1, 2 or 3 years to become absolutely excellent in a critical area. Be willing to pay price. Make any sacrifice to be the best at what you do. The 3+1 formula. 3+1 formula for mastering any skill is simple. अब क्या है, 3+1 formula है क्या? The 3+1 formula for mastering any skill is simple and it works very single time. First, read in a skill area each day, even if only one for 15 to the 30 minutes. Knowledge is cumulative. The more you read and learn, the more confident you will become that you can do this job in an excellent fashion. अब क्या होता है, 3+1 फॉर्मूला देखो. 3+1 फॉर्मूला फॉर मास्टरिंग एनी स्किल इज सिंपल. इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम. ये हमेशा काम आती है. फर्स्ट, रीड इन द स्किल एरिया ईच डे. जो आपको स्किल बढ़ानी है उसके बारे में पढ़ो हर दिन. इवन इफ ओनली फॉर 15 और 30 मिनट, चाहे 15 से 30 मिनट पढ़ना है, पर पढ़ो. नॉलेज इज क्यूमुलेटिव. नॉलेज क्या है, क्यूमुलेटिव होती है. द मोर यू रीड एंड लर्न, the more confident you will become that you can do this job in an excellent fashion. जितना आप उसे पढ़ोगे उतना ही वो आपके अंदर समाती जाएगी और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी. जो भी आपको चीज़ पसंद है ना, उसके बारे में 15 से 30 मिनट पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो, ऐसा ये कह रहा है. ठीक है, करके देखते हैं. Second, listen to educational audio programs on the subject in your car. अपने एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ो. जो एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट सुनते हो, तो अपनी गाड़ी में जब बैठते हो तब सुनो. एवरेज ड्राइवर्स टुडे स्पेंड 500 hours to 1000 hours each years in their cars driving around during the day. अब इतना 10,000 घंटे भाई कोई गाड़ी में बैठ के गाने सुनते हुए जाता है, उससे बढ़िया कोई लर्निंग स्किल सीख ले. टर्न ड्राइविंग इनटू अ लर्निंग टाइम. अपने ड्राइविंग को लर्निंग टाइम में बदल दो. यू कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल इन योर फील्ड बाय सिंपली लिसनिंग टू द ऑडियो प्रोग्राम्स इन योर कार रेदर देन म्यूजिक. म्यूजिक सुनने से बढ़िया है उनको सुनो जो कि आपके काम आ जाए. थर्ड, अटेंड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप ऑन योर सब्जेक्ट. अपने सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड. मैनी पीपल लिव्स have been changed completely by attendance at a single 1 or 2 day seminar on a key subject forever after they were completely different in that area. अपनी completely seminars लो. And finally, factor is to practice what you learn at the earliest possible opportunity. Every time you hear a good idea, take action on it. The person you hear one idea and takes action on it is more valuable than a person who hears 100 ideas but takes action on none of them.
अब क्या होता है कि अगर आपको कोई एक आइडिया अच्छा लगे तो आप उस पर काम करो, बाकियों की तरह नहीं कि बस 100 आइडिया सुन रहे हो और काम एक पे कर रहे हो, नहीं, 100 आइडिया सुनो, अगर आपको 100 अच्छे लग रहे हैं 100 के ऊपर काम करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस व्हाट यू आर लर्निंग द फास्टर यू विल बिकम कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड इन दैट एरिया। अगर जो चीज़ आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। फुटबॉल की कोई वीडियो देखी, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, क्योंकि आप जब सीखोगे तब आपको अलग से देखना पड़ेगा। will become competent and skilled in that area. The more you practice, the more you confidence you will develop. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. The more rapidly you will overcome your feelings and inadequacy in that skill, the faster you will master it. Once you add that skill, your mental toolbox, you will possess it for the rest of your career. तो जब आपने किसी भी एक स्किल को मास्टर कर लिया, वो आपको रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपकी मदद करेगी और आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेगी. Resort today, right now, to join the top 10% of the people in your field. अपने फील्ड के टॉप 10% को आज आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा वादा कीजिए. डिटरमाइन हु दे आर, पहले डिटरमाइन करो है कौन वो लोग. व्हाट दे अर्न, कितना कमाते हैं. व्हाट दे डू डिफरेंटली फ्रॉम यू, क्या अलग कर रहे हैं वो आपसे. इफ़ यू आर डूइंग अ व्लॉगिंग चैनल, वो आपसे क्या अलग कर रहे हैं. Determine the special knowledge and skill they have developed and resolve to develop them yourself. Remember, anything that anyone has done within reason you can do as well. No one is better. कोई भी better नहीं है. No one is better than you. No one is smarter than you. The very fact that the top people in your field were at same time, not even in your time field, at all is proof whatever they have achieved, you can achieve yourself if you simply set it as a goal and work at it long enough and hard enough. There are no limits. कोई लिमिट नहीं है. Your 12-step program to personal excellence. Here is a summary of 12 steps you need to take to succeed greatly in the area of your life. Have a desire. क्या है पहले? Have a desire. In what one skill area would you like to be absolutely excellent? Believe. What action step in your personal development could you take right now to increase your belief and confidence that you can master the new skill? Write it down. Write down a clear present tense statement describing yourself as you would look, feel and behave as a result of mastering this skill. Analyze your starting point. अपने starting point को analyze करो. What are your areas of strength and weakness in this area currently? Determine why you want to excel in this area. Make a list of 5 positive things that would be different in your life as a result of becoming excellent in a particular skill. Set a deadline. Deadline set कर दो. Determine exactly when you will be excellent in this skill area and set sub deadlines for the steps you will take each day, week, month. Identify an obstacles. Determine the obstacles that stand between you and achievement of excellence, especially the obstacles within yourself. 8. Determine the additional knowledge and skills you need. Identify the specific resources you will require, including books, audio programs, seminar, and the study schedule you will need to follow to master this new skill. Determine the people you will need. Who's the people who help cooperation will you require to master the skill. Make a plan. पहले plan बनाओ. Create a list of everything that you can think of that you need to do achieve excellence in this area. Visualize करना है अपने mind में. See yourself in your mind eye. अपने दिमाग की आंखों से देखना है अपने को. Your inner mirror, अपने inner mirror को देखना है. If you were already a recognized expert in the new area, repeat this exercise over and over until the image is accepted by your subconscious mind as a command. मतलब अपने आप को इतना विजुलाइज करना है कि मैं स्किल पे काम करूँगा और मैं इसे अचीव करूँगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए. और दिमाग में आप ये अचीव करो कि हाँ मैं हो चुका हूँ, मैं अपने फील्ड में नंबर 1 पे हूँ. जितना इसे सोचोगे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और उस चीज़ को मान लेगा. और जब वो मान लेगा तब आप अपने आप पढ़ने लग जाओगे. नेवर गिव अप. और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेवर गिव अप. लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, बट यू हैव टू डू work hard. Once you have decided to develop this key skill, you make decision that you will never give up until you are recognized by others are very good in this area. Like following a proven recipe or formula, there is virtually nothing that you can accomplish
if you apply this 12-step method and work on it continually until you have achieved your goal. Become an expert in your field. आपको क्या है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है. Resolve today to join the top 10% of people in your field. Make a lifelong commitment to excellence. Identify the key result areas of your job, the things you absolutely positively have to do well to be successful in your field. Identify your weakest key area and start a do it to yourself project to become excellent in that area. Determine the additional knowledge you will need to plan get to the top of your field and then develop the plan to acquire that knowledge. अब क्या है कि एडिशनल नॉलेज को गेन करो. यू विल नीड टू गेट टू द टॉप ऑफ योर फील्ड एंड देन डेवलप अ प्लान टू एक्वायर दैट नॉलेज. डेडिकेटेड योर सेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अपने आप को डेडिकेट कर दो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए. रीड लिसन टू द ऑडियो प्रोग्राम, अटेंडेंस कोर्सेज एंड सेमिनार्स एंड देन पुट वॉट यू लर्न इन टू एक्शन एज क्विकली एज यू कैन. ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है टॉप चैप्टर 10 इम्प्रूव योर फैमिली एंड लाइफ रिलेशनशिप. इसको कल पढ़ेंगे, जिसकी आज ज़्यादा ज़रूरत है उसको कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं. 11 चैप्टर होने वाला है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. आई गेस ये होगा 30 से लेकर 45 15 पेजेस का है. ऑप्टिमाइज योर हेल्थ एंड वेलनेस, ये भी पढ़ना है यार. हेल्थ को आजकल हम टाइम नहीं दे पा रहे. मेजर योर प्रोग्रेस, ये भी पढ़ेंगे. तो ज़्यादा चैप्टर्स रह नहीं गए हैं. 15 अभी हम लोग हैं 19. ओके 20 चैप्टर्स होंगे. आई गेस 21. ओके 21 चैप्टर्स हैं. हम लोग 11th पे पहुँच गए हैं. पेज नंबर 130 पे हैं और आई गेस 200 कुछ पेजेस हैं. 280 समथिंग पेजेस हैं. वी विल रीड इट एंड फिनिश इट as soon as possible. Thanks a lot guys for joining this live stream. Love you and take care. Bye bye.